The session will be chaired by Professor Yogesh Singh, Vice-Chancellor, Delhi University. The panelists for the session are as follows: Professor Ami U. Upadhyaya, Vice-Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar, Open University, Ahmedabad, and Professor Alok Rai, Vice-Chancellor, University of Lucknow. All these scholars are well known and esteemed in their respective fields of research. We are privileged to have them among us. I now hand over the dais to the chair. So kindly begin the session. Thank you. Good afternoon. Dr. Subhash Sarkar, Minister of State for Education, respected educationists, officers of UGC, AICT, and my dear friends. Good afternoon again. So this session is very, very important, interesting session. Success stories and best practices of NEP 2020 implementation. And when we talk about implementation, we all have many, many success stories. But implementation is the crux of everything, and it is very, very important. When we talk about Indians, Indians are good philosophers. Indians are good planners. Indians are good strategists. But when it comes to implementations, Indians are not that good. So we should be very, very careful that this is very, very important subject, and success lies in its correct and timely implementation of national education policy. So we have with us two educationists of India. I would like to request Professor Ami Upadhyaya to share her views about the whole subject. Honorable Education Minister, Honorable Chairman UGC, Honorable Chair, co-panelists, and Vice-Chancellors and academicians across nation. It's really a matter of pride and privilege to talk about my own institution, and especially NEP 2020 implementation of the same. It is like, Ramayana in one shlok when we have to finish everything within 5 minutes. When I was reading national education policy, somewhere it sounded very much like open university, because open distance learning talks about student-centric approach. It talks about flexibility. It talks about openness. It talks about inclusive education. It talks about use of technology in education. And so somewhere I found it very close to open distance learning. And I think to be open university, that openness has really helped us a lot to introduce many more suggestions, recommendations by NEP 2020. First of all, I would say that first we started having meeting with all the stakeholders, and we had very detailed, thorough, full-day meeting with particular groups of stakeholders. With their suggestions, we moved further. When it comes to student-centric approach, multidisciplinarity was there. We have choice-based credit system where BBA, BCA, BCom student can opt for performing art, Indian classical dance, and Indian theatre, translation studies, comparative literature. So we have that choice-based credit system, and the platter is really very huge. So we did that. After that, being more student-centric, we have on-demand exam. 4 times a year we conduct examination where students can opt for any of the timetable they are comfortable with. We have also introduced Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Parapara courses, Indian poetics, comparative literature. We have certificate and diploma in spoken Sanskrit. There is a concept recognizing prior learning. National education policy talks about indigenous knowledge, languages, literature. So here what we have done is that be it Bidang, Ahava, Chota Udaipur, Kutch, we have very beautiful craft, skills, language and literature. With recognizing prior learning, we have introduced them as one of the courses. So if the learners from that particular region don't want to opt for the conventional courses, one of those courses would help them, would motivate them, encourage them to continue with those skills and language and literature, at the same time getting registered for graduation or post-graduation. So recognizing prior learning that we have introduced here. We have flexi entry, flexi exit since 2 years, 4 semesters. We have credit transfer also. That also we have done at our university, and many a times from the conventional universities, we have very good mass getting transferred to getting, moving to our own university.
one of the very beautiful concept that national education policy has come up with and we have introduced is that we give admission in course, not only programs. That if anywhere from any conventional university a student is interested in getting admission in particular one paper, he or she can get admission in one paper and can earn credits and can move further, be it be for the sake of credit or knowledge. National education policy emphasizes a lot on gross enrollment ratio, GER. Looking at a few years, maybe a decade or more than that, gross enrollment ratio at higher education is comparatively connected to eligible enrollment ratio because there are so many students, a lot of dropout ratio at school level. So in Gujarat, we have taken an initiative since 2 years we had been trying. Successfully, we have done it. That we have adopted Gujarat open schooling. As there is IGNOU, but still state open universities are doing very well when it comes to the numbers. In the same way, there is already NIOS, but still the need for regional language courses is huge. So we have adopted open schooling and we are convinced about it that once those state open schooling start working wonderfully, that dropout ratio would come down. So that is very important when matter comes to encouraging multi-language, multilingual approach. At our university, students can write their answer papers in English, Hindi, Gujarati, and Sanskrit too. So we have made special arrangement, a special committee has been constituted to check those papers. So that we have done. For inclusive education, we have established Atri Special Learner Center at our university. Atri Special Learner Center specially works for the transgenders, sex workers, HIV positive, disabled, and jail inmates. We have been awarded that more than 100 transgenders have been studying with us, whose fees that comes from the state government. 98 community-based organizations and NGO of sex workers, we have been working with them, and their children are getting registered for Gujarat Open Schooling. So that's what we have been doing extra for that. When it comes to inclusive education, Gargi Center for the Holistic Development of Women we have established. And especially when I was cherishing talk in that inclusive education session, that Gargi Center for the Holistic Development of Women, that specially works for, they specially gives grant for research on policies on women, how they are working, what are the expectations, and especially history is always a his story, it is never her story. So there are comparatively lesser documentation or books written about women and written by women. So we give special grant to women writing for women. So that is also, Gargi Center also works for certain courses where the women will be Atmanirbhar. So we very strongly believe Nari Atmanirbhar, to Bharat Atmanirbhar. So in that direction also we have been working. Yesterday, when we had Honorable Prime Minister, sir, who talked about land to lab and lab to land, we have signed an MOU with Wagh Bakri, Arvind, and so many industries, very well famous, well-known industries in Gujarat, where we are introducing customized courses, what they want us to do. So we introduce customized special courses for them. Generally in India, nowhere there are youth festivals for open universities. We have conducted 3 years successfully where with the age of 72, 78, people participate, they perform very, very well. So these are all the things that we have been doing. I have made suggestion that to encourage more courses in regional languages and more translations. If every state can have their own indigenous MOOC platform, as we as a university, we have our own indigenous platform, which is known as Omkar-E. If every state has indigenous MOOC platform like Swayam, all the possible, we have many sectorial universities also, they may put their content and those contents, those courses and programs in regional languages would be available to huge mass, and all the possible after 3 to 5 years, we'll have a huge reservoir of the same. In Indian knowledge system, we have done a lot of things, and we have introduced Department of Translation Studies, Department of Indian Languages, and Department of Comparative Literature too.
Thank you very much. It was really a pleasure talking about the university. But I'm sure, dear, I'm very thankful to this lady that who really made all of us realize that within 3 minutes or 5 minutes, we could complete our points. During lunchtime, everybody was discussing whether through some remote they could slow down your watch. Thank you very much. Professor It was pleasure sharing my views and my experiences. Thank you. May I now request Professor Alok Rai, Vice-Chancellor, University of Lucknow, to share his views about the success stories and best practices of NEP 2020 implementation. Most respected, Honorable Her Excellency in absentia, Minister of State for Education, Dr. Sarkar, my fellow colleagues on the dais and off the dais, and very, very dear friends. Draft regulation of new education policy has been, was in public domain for almost 2 years before implementation. So at University of Lucknow, we had been very, very thorough with respect to its study. And the thing that we found to be the easiest to implement as far as implementation of new education policy was its implementation in its curriculum. And I claim that at University of Lucknow, we have been able to implement the curriculum aspect that was proposed in new education policy in letter and spirit from the academic session 2020. I mean in letter and spirit, so I may bore you a little while mentioning certain clauses as well, where we borrowed the provisions from. So, in our postgraduate program, as mentioned in clause 11.9 and 11.10, we had implemented in our postgraduate program from the academic session 2020-21. So, वर्ष 2020-21 सत्र के दौरान ही उसमें लागू कर दिया गया. And from academic session 21-22, we had implemented in our PhD coursework as well as undergraduate course. With respect to the provisions mentioned in clause 24.1 and 224.5, that was pertaining to implementation of information technology in various aspects of institutional functioning, I would share two success stories. One was development of our own learning management system, SLATE, which we term it as Strategic Learning Application for Transformative Education, which we obtained copyright also of in the year 2020 only, the year of introduction of new education policy. And another, in our examination section, we launched our EASE portal, that is electronic access to the services of examination. Now, with the implementation of these two IT models in our university setup, this was not just a tool that helped us implement new education policy and reap the benefits that were supposed to accrue to the organization, but also acted as a model for our revenue earning. So, a state institution that is normally financially starved, these are the tools that could be used for even mustering revenue. Now, what was mentioned in clause 11.12, page 38, we also were promotion of incubation center and in development of entrepreneurship in different functions of the university among students. We had formed our own Section 8 company. In clause 11.13 and 11.14, which talks about introduction of newer programs, we launched several newer professional programs, and interestingly, with such introduction, we got tremendous response, which again added to the kitty of the institution, which enabled us to survive and implement several provisions of new education policy, which at times used to be very, very cost demanding. Internationalization was one aspect that was mentioned in clause 12.7 and clause 22.9 in new education policy draft. And I can share that in the year 2019-20, where we had received 77 applications from international students to admission to our institution, for the academic session 22-23, we already have got 835 applications from international students.
And with respect to student support that was mentioned in clause 12.12, we used our university money. We used the money that was supposed to be shared from the teachers and officials of the universities to support students, but also drawing inspiration, motivation, and direction from our Honorable Her Excellency, we tried to reach out to society, and under VC Care Fund, we created a VC Care Fund. We got on the very first day of launching to support financially to our students, we got almost 4 lakh rupees from the different sections of society to support these students financially. Similarly, clause 12.9, which talks about students' participation in governance of the university, we also have made them party to almost all non-statutory committees where it is not binding, made them part of it. Last but not the least, I would say this is one such draft. New education policy is one such Kalajayi draft, which does not only talk of intellectual quotient, furthering and strengthening intellectual quotient of the student, but also emphasize on the emotional quotient and spiritual quotient. We at University of Lucknow have had several such initiatives by partnering with numerous organizations that would have, that could have, and that shall subsequently, in all subsequent years, help our student not just grow, but also develop and attain the success that is due to our students, to our institutions, to our country, and to our society for the greater cause of the university. Thank you very much. Thank you, Professor Alok Rai. Now, House is open for discussions. As we all know that we have many success stories, but my request to all of you, please confine yourself to the best practices and success stories related to national education policy, because time is very short. We want to learn from each other. Please. हम इसके साथ ही समय की प्रतिबद्धता को ध्यान रखेंगे सर। तो मैं यहाँ आने से पहले गोंडवाना यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में काम कर रहा था। वहाँ एक प्रयोग हमने किया, उसको बताता हूँ। वहाँ गांधी जी की नई शिक्षा तालीम को लेकर हमने एक प्रयोग किया। वहाँ के जो बच्चे, सोशल वर्क के बच्चे जो होते थे, उनको प्रयोग करते हुए केवल कक्षा में पढ़ाया जाता था। हमने क्या किया, वहाँ एक NGO के साथ फील्ड वर्क में लगाया। उसके द्वारा उनको हमने PG डिप्लोमा दिया। उससे काफ़ी बच्चे फील्ड काम में करते करते और उनका शिक्षा के लिए भी उनका योगदान रहता था और फील्ड वर्क में भी काम करते थे। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग रहा है। धन्यवाद सर। मैं अध्यक्ष महोदय से कहती हूँ अत्यंत संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए सर। मैडम, कैन आई मेक एन अभी तो बहुत टाइम बचा है हमारा। सर, मैडम, कैन आई मेक एन इंटरवेंशन? Chairman sir, please look to your left. कहाँ पे? यहाँ. हाँ, बोलिए मैम. Sir, the Vice-Chancellor of the University of Pune is there. Pune has a very successful model. I was the director of the International Student Center. We had students from 41 countries and 10,000 students. And this was from 2001 to onwards. So I think that is also a very good model for internationalization and getting international students in MOUs. सर, मैं प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। हमारा विश्वविद्यालय 120 साल पुराना हो गया है। 4 मार्च 1902 को इसे स्थापित हुआ था। तब से लेकर आज तक जो भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया जाता है, वहाँ साक्षात इसकी प्रैक्टिस होती है। भी 120 वर्ष से 9 बजे से लेकर साढ़े 9 से लेकर 10 बजे तक यज्ञ हवन होता है, जिसमें हमारी फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। उसके बाद क्लासेस शुरू होती हैं। ये प्रैक्टिस हिंदुस्तान में, दुनिया में शायद पहला ये विश्वविद्यालय है जहाँ अग्निहोत्र रोज़ डेली होता है। अभी ऑनरेबल हमारे चेयरमैन साहब AICT वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी साक्षात देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पुस्तकस्थ न हो करके प्रैक्टिकल रूप में अपने प्रैक्टिसेस में इस चीज़ को, ज्ञान परंपरा को लाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। यही श्रेयस्कर होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। Good afternoon, sir. Here, sir.
Yeah, my name is Professor Vilas Sapkal, former Vice-Chancellor, Nagpur University, presently MGM University Vice-Chancellor, Aurangabad. The best practice that we could do is, NEP says that you have to integrate teacher and family in education and teaching learning process. So basically, we have involved now families of students in teaching learning process by way of, in earlier days it was value education from grandfather, grandmother, kaka, chacha, mama. So basically we have integrated now family, involvement of family in teaching learning process so that value addition and transformation is taking place. And second best practice, there was a lot of waste flying around. So basically in incubation center, we have transformed using biological process into wealth, and that was done by the students of engineering. These are the two practices we could do it by. Thank you. Dr. Saab, hello. From this side again. From the same side, yes. Professor Rajkumar, Punjab Vice Chancellor, Punjab University, Chandigarh. मैंने सर जो है ऐसे काम तो कई किए हैं, 2-3 काम हम बताना चाहेंगे, 2 काम केवल बताएंगे. CIL सैफ 16 जो है सेंटर हैं पूरे इंडिया में, और एक सेंटर हमारे पास भी है. बड़े फख्र के साथ हमको करना पड़ रहा है कि हम 2018 में ज्वाइन किए थे, और इस CIL सैफ को मैंने 24/7 में खोल दिया. हमारी आमदनी जो 2018 में मात्र जो है 65 लाख थी, आज उसकी आमदनी जो है वो करीब 3 करोड़ के आसपास है. और अभी हमें लगता है कि 1 महीने पहले जो है महामहिम उत्तर प्रदेश ने जो है हमारे यूनिवर्सिटी का जो है एक भ्रमण किया कुलपतियों के साथ, और 2.5 करोड़ की 2 मशीनें मैं नई वहाँ पर CISF पर मैं इंस्टॉल किया. दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट एवरी यूनिवर्सिटी कैन स्टार्ट. थैंक यू. My name is Professor Anand Agarwal from Chandigarh University, and I have been observing a lot of things here. This is, I think, first time after a long time this kind of convention, or you can say Sammelan, is being organized. I want to congratulate UGC for this. But my question is it going to be an annual event or a regular event? Because I can see so much enthusiasm in the VCs here in this room, in this hall. Everybody's talking about the initiatives we have done in our universities. We talk about internationalization, knowledge sharing from outside. Why don't we make a platform for knowledge sharing for Indian universities among ourselves, so that we can proudly put our initiatives and our achievements there, share with each other and learn from each other in a regular manner using some platform? Is there any plan by UGC to get this forward that will also help us in NEP implementation in future? So the question is there a plan already there or not? नहीं, प्लान तो चलते ही रहेंगे, आगे भी करेंगे, मिलेंगे भी. आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरा बस 1 मिनट का समय मैं लूँगा. मैं अपना अनुभव का शेयर करना चाहूँगा. मैं आवाज़ आ रही है? आ रही है. मैं कोलाहन यूनिवर्सिटी का हूँ. ये कोलाहन यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से टूट करके बना हुआ है. करीब 13 साल का विश्वविद्यालय है. और वहाँ पर मैं जैसे पहले ही बताया था कि आदिवासी बहुल स्थान है वो, लेकिन वहाँ पर एक आदर्श म्यूजियम नहीं था. मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रयोग किया जाए, और मैंने फैकल्टी का जो जिसमें थोड़ा सा कम छात्र है उनमें से बड़ा हॉल लिया, और एक अपने फैकल्टी मेंबर के साथ मिल करके सारे गांव से कलेक्ट करके करीब मैं 500 ऐसे आर्टिकल बना दिया जो कि हमारे म्यूजियम के रूप में तैयार हो गया. तो ट्राइबल में कैसे उनकी भोजन परंपरा एवं कैसे उनका वो आनंद उत्सव कराते थे, कैसे भोजन बनाते थे, कैसे वाद्य यंत्र है, कैसे ढींकी है, पहले कैसे धान से चावल बनाते थे, ये सारे करीब में 500 आर्टिकल हमारे ला करके म्यूजियम का आइटम बना दिया. इस प्रकार के मैं समझता हूँ ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार सभी लोग हम कर सकते हैं, लोकल नीड को देख करके. ठीक है, एक प्रश्न और, बस एक प्रश्न. Good afternoon to all of you. My name is Rajkumar. I'm the Vice-Chancellor of OP Jindal Global University. I just want to quickly share with you 2 things. We talked about internationalization earlier. One of the efforts that has happened in several universities, including us, is how do we recruit faculty members, international faculty members on a full-time basis from around the world, because one of the extraordinary things that we have seen in the evolution of Indian imagination for higher education is the fact that not only we are in a position to attract students, but also a lot of researchers from around the world are looking to India. And so in the last several years,
we have ended up recruiting over 120 full-time faculty members from 43 countries in the world who are living and working in Sonipat. I think that's a very important effort for us to promote internationalization from the standpoint of inward mobility of international scholars. An equally important effort was in relation to research. And I must say that this is a very tough aspect for non-STEM, non-medicine universities like us, where the focus is on humanities and social sciences. We created a strong incentive structure for faculty members to publish. And I'm happy to report that in the last 3 years, our faculty members have produced over 500 Scopus publications. A large part of it was due to two things. One, we reduced the teaching load of our faculty so that they can devote more time on research. And the second was to create financial incentives so that faculty members feel rewarded. And lastly, I want to ask a question to Dr. Amy Upadhyaya. She mentioned about the innovations happening. Ma'am, if you can briefly tell us about how a distance education framework can be integrated with the current trends in online education, where national and international edtech platforms are creating more access to education through expanding and democratizing the opportunities for students. All right. Please, ma'am. Thanks for the question, Professor Rajkumarji. During my speech, I mentioned about our own indigenous MOOC platform also, Omkar-E, which is similar to a SWAYAM platform with 4 quadrants. In my speech, I mentioned about that knowledge should not be limited to particular subject. I mentioned about the sectorial universities also that in Gujarat we have. And if generally what happens today morning also, there was a question related to that if the SWAYAM content is only in one language, it is not accessible to everyone. So while we speak, either the mic has to come down or there has to be footrest or support. So generally to bring down the mic rather than to have certain crash courses, as I was given only 5 minutes, I did not mention about that. That at our university we have certain crash courses also. We have prepared crash courses to prepare the students. When matter comes to platforms, I feel that it is not only particular platform that either SWAYAM this or that. Now I'm very happy that Honorable Prime Minister Sir has announced digital university. And digital university would be connecting to most probably all the platforms and knowledge in regional languages. Not only that, all the possible that in future under the visionary leadership, that skills university will be also there, language university will also be there, the conventional courses will be also there. So there's possibility. Thank you very much. Last, please. Yeah, yes. This is Dr. A.K. Tyagi. I am Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. I want to share some of the best practices being followed over there. सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक विद्यालय भी हम चलाते हैं, जिसमें जो भी हमारे आसपास के मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की है। और अभी भी इसमें 40 के करीब बच्चे हैं। उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ कराने का, जो भी उनकी दिनचर्या के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो लगभग सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनके मनोरंजन के लिए उनको दूसरी जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह करा के उनको इस लायक बनाया जाता है ताकि वो अपनी जीविका ठीक से कर सकें। इसके साथ ही साथ महामहिम के निर्देशन में हमारी जो राज्यपाल महोदय हैं, हम लोगों ने आंगनवाड़ियों को लेने का कार्यक्रम भी शुरू किया है। और इसी साल में हमने जो हमारे लगते हुए 5 जिलों में 2 जिले ट्राइबल एरिया के पड़ते हैं, उनके करीब 51 आंगनवाड़ियों को विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों ने लिया है। और वहाँ पे जो भी बच्चों को जो स्पेशली उनके एजुकेशनल टॉयज़ वगैरह या उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब प्रोवाइड की गई हैं। इस तरह विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए ये सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पूरे समाज को, स्पेशली जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको ये मैसेज देना है दैट वी केयर। थैंक यू। यस प्लीज। Shashank Dalvi from MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai. The water is scarce commodity, and in our campus we were facing that particular problem of water
the corporation supply of water is not enough for the campus as such, and we have to procure the tanker for the water supply, but we have developed the storage tank, and also the water is stored in the rainy season also. The rainwater harvesting is also practiced, and vertical water filtration plant, as the soil or the area that much is not available for the horizontal water filtration plant. So vertical water filtration plant, for which we have also patent has been filed for that particular vertical water filtration plant, and the water is just filtered by the gravity only, and the cost is also very much reduced with that. And this particular experiment is also practiced in another universities in the south also. Yes. Thank you very Hello. much. मैं कल्पलता पांडे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से बोल रही हूँ, कुलपति हूँ वहाँ की। हम लोगों ने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की हैं और मैं यहाँ पर उसका उल्लेख करना उचित समझती हूँ, समीचीन समझती हूँ। हम लोगों ने जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है, संकुलों के निर्माण की बात की गई है, कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई है सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। हम लोगों ने अपने हायर एजुकेशन में जो हमारे 138 कॉलेज हैं एक ज़िले में, उनके हम लोगों ने संकुलों में उन्हें बांट दिया है, 15 संकुलों में। और ये देख के बांटा है कि वो 10 किलोमीटर के एरिया के कॉलेज एक साथ हों, और उसमें से कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो सुविधा संपन्न हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सुविधाएं उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं। तो ये जो संकुल हैं, इसमें सुविधा संपन्न कॉलेजेस जो सुविधा कम है जिनके पास, उनकी बहुत अधिक हेल्प कर रहे हैं। और हम लोगों ने उसी में गेम्स भी बांट दिए हैं, स्पोर्ट्स भी बांटे हैं। 15 संकुलों को 15 गेम्स दिए हैं जो AIU के नॉर्थ जोन से होते हैं गेम्स, उनको हम लोगों ने दिया है। और उससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ कि हमारे बच्चे 2 बच्चे गोल्ड मेडल लाए 10,000 स्क्वायर मीटर में। और एक हम लोग और अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मैं बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पे, कि अभी तक सब जगह एलुमनाई एसोसिएशन है यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे यहाँ क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम लोगों ने लिविंग लेजेंड ऑफ बलिया बनाया है। और उसमें जो बलिया से बहुत अच्छे लोग निकले हैं, जगह जगह विदेशों में भी हैं, देशों में भी हैं, और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन सबको अपने विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा है और उनके राय को भी साथ में लेकर हम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अब नहीं हो गया। We can take only one question, sir. Only one. Very brief. Very brief. Please, sir. Please, sir. Very brief. Myself, Professor Uddhav Bhosle, Vice-Chancellor Swami Ramananda Tirth Marathoda University, Nanded, Maharashtra. Sir, at our university has developed swab testing laboratory for COVID detection during a complete lockdown period. This facility have been established with the available resources at the university and being operated by the student and staff of this university. So far, this laboratory has tested 5 lakh samples in this area. Initially, this facility was not there. Samples from Nanded have to send either to Pune or Hyderabad, but because of this facility, it has helped a lot of people within the jurisdiction of this university. Thank you. Sir, may I now request our chair to conclude the session? Thank you. तो मैं सोच रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमसे क्या चाह रही है। ये डॉक्यूमेंट तो है नहीं, चाह तो बहुत कुछ रही होगी। तो पहला काम ये चाह रही है, हम सब यहाँ वाइस चांसलर जो बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले टीचर्स पढ़ाएं, पहला काम, और फिर अच्छे से पढ़ाएं, दूसरा काम। दूसरा बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप क्लास में नहीं जा सकते, पर फिर भी उसके लिए कोई सिस्टम बन सके तो हमें बनाना चाहिए। जब मैं पहली बार वाइस चांसलर बना तो मैं 3-4 सीनियर वाइस चांसलर से मिला। मैंने सोचा कि मुझे कुछ एडवाइस दे दीजिए क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। तो उन्होंने कहा 2 काम मत करना, एक तो यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट मत कराना और एक कंस्ट्रक्शन मत कराना, आपकी ज़िंदगी आराम से चल जाएगी। तो आप में से कितने हैं जो ज़िंदगी आराम से चलाना चाहते हैं और ये 2 काम नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी का नुकसान हो जाता है, उसमें सत्यानाश हो जाता है। तो दोनों काम ज़रूर करिए क्योंकि यूनिवर्सिटी नई भी बननी है, NEP चाहती है, और दूसरा जब नई भी बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगी और अच्छे टीचर्स होंगे तो बात बनेगी किसी यूनिवर्सिटी। तो ये 2 चीज़ें हमको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि टीचर्स जाएं भी, पढ़ाएं भी, उनका रिक्रूटमेंट भी हम करें और उसके कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगाएं। एक और बात आज बातचीत में आई थी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी की। तो नॉर्मली हमारा क्या हम सोचते हैं कि अगर
हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। ये एक भाव है जो खासकर एजुकेशन सिस्टम में है, क्योंकि हमको आदत है, हम पॉलिसीज देखते हैं 5 करोड़ के देश की, 36 करोड़ के देश की और 20 करोड़ के देश की। भारत ये नहीं सह सकता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एनईपी ये चाहती है कि हम क्वांटिटी भी बढ़ाएं और क्वालिटी भी बढ़ाएं। ये दोनों काम जो कर सकता है ना, वो सक्सेसफुल वाइस चांसलर होगा। आप बनना चाहते हैं तो इन दोनों कामों करो। 140 करोड़ का ये देश है, ये आपसे ये अपेक्षा रखता है। इतने सारे बच्चे हैं, जब हम जीईआर की बात कर रहे हैं तो जीईआर का सारा लोड डिस्टेंस एजुकेशन पे मत फेंक दो। उनकी अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यूनिवर्सिटीज़ को इसमें आगे आना चाहिए। ये भी मुझे लगता है कि एनईपी चाहती है, अगर हमें सक्सेस स्टोरीज बनानी है तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वांटिटी बढ़ाएं यूनिवर्सिटीज़ में। आपकी जितनी, जब आप ज्वाइन करते हैं, जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उसके डबल आपको हट जाते हुए करने चाहिए। आउटकम बेस ये है किसी भी वाइस चांसलर को और आपका। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 5,000 बच्चे पढ़ते थे, 5 साल बाद जब आप निकले तो 5100 बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने देश का बहुत भला नहीं किया। आपने क्वालिटी के नाम पर क्या किया आप जाने, लेकिन एनईपी ये नहीं चाहती आपसे। अगर एनईपी नाम की कोई चीज़ बोल सकती होती तो ये भी बोलती कि 140 करोड़ की अपेक्षा है। मेरी रिक्वेस्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बने। इसको अगर आने वाले वक्त में जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, आप शेयर करें कि हमने ऐसा किया। अब आया कि एक है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना रही है। नाउ in Delhi University, I also want to share a success story. We have gone through and now we have a detailed document, we say undergraduate curriculum framework. Here the point is, it is for commerce students, art students, and social science students and such students, not for technology, because technologies, they are already running 4-year programs. Medical education is also slightly different. Then we decided that everything should be part of curriculum. Nothing should be co-curricular, nothing should be extracurricular activities. So there should be 7 pillars in the whole system. One is your core subject, 50% weightage to that. Then is the elective courses, some weightage to that, depending upon the choice of the student, because it is student-centric, choice-based system. Second vertical. Third vertical is generic electives. Student can take things from anywhere. Fourth vertical, which is also equally important, जिसकी बात बहुत हुई, ability enhancement courses, जिसमें रखा सिर्फ भारतीय भाषाएं, कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं यहाँ से पढ़ेगा स्टूडेंट, और हर सेमेस्टर में हर वर्टिकल से एक कोर्स आपको लेना है। ऐसा भी नहीं कि आप छोड़ सकते हो, लिस्ट है, लिस्ट में जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़िए। इसके बाद है स्किल एनहांसमेंट, नेक्स्ट है इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, अप्रेंटिसशिप, नेक्स्ट है वैल्यू एडेड कोर्सेज है, और भारतीय ज्ञान परंपरा। सब में से हर सेमेस्टर जब स्टूडेंट लेंगे तो ये इंटीग्रेट होगा पूरा सिस्टम इसके साथ में। फिर जो बात होती है कि कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर, इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देन यू कैन डू माइनर इन philosophy, social science, English, Hindi, whatever. But you have to earn 28 credits out of 176, which is the total framework. So it should be student-centric. This framework is available on university website also. I am not saying you should replicate it, but please see that also, because we are implementing that from this semester for arts, science, commerce, and other students. Next, when Ami Upadhyaya ma'am said is a course-based registration. Now time has come, universities should think about it. If as a student I don't want to register for a full program, why should I register for a full program? I want to study only 2 courses, for example, data science and artificial intelligence. Those 2 courses will change my life or give me some value in my life. I want to register. Right now, very few universities and IITs are doing as I am told, but most of our Indian university system, they are not doing it. We only admit students in courses like programs. But now we should think that why should, if a student doesn't want to study for 3 years, then it is better to have it like that, course-based registration, open for every citizen. मैं करना चाहता हूँ, it may be online mode or blended mode or offline mode. ये एक बहुत ज़रूरी है जो कि हमको करना चाहिए।
एक और बात है जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में राष्ट्र भाव की बात की थी, एनईपी क्या चाह रही है हमसे? राष्ट्र भाव का निर्माण करना। और ये जो राष्ट्र भाव का निर्माण है, अभी एक वाइस चांसलर साहब ने कहा कि वो पेरेंट्स से आता है पेरेंट्स से, पर बहुत अच्छे पेरेंट्स के बच्चे भी खराब हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, ये भी पूरा सच नहीं है कि पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। हो सकता है न भी हो, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें इफेक्ट करते हैं। स्कूल भी करेगा, सोसाइटी भी करेगी, सब लोग करेंगे। इसलिए हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसको बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई बात नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं हुई कि जब लोग बना रहे थे वो लोग इतने राष्ट्रभाव से भरे थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। आज 75 वर्ष के बाद हमको ऐसा भी कुछ सोचना पड़ेगा। यानी जो चीज़ छूट कॉन्स्टिट्यूशन में गई, जिसकी आवश्यकता तब महसूस नहीं हुई, आज 75 साल बाद महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी रह रही है, जिसका कि मैं समझता हूँ हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। और एनईपी अपेक्षा भी करती है। एक और बात है जो बात है कि किसी तरीके से एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो जो खुश रह सके, दुख को भी झेलना जानता हो, ऐसे व्यक्ति का यदि निर्माण करेंगे, यही एनईपी का भाव होगा। और खुश रहना क्या, यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ते हुए बच्चे अगर सुसाइड कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ पूरी शिक्षा पर ये बहुत बड़ा दोष लगता है। ये भी एनईपी कहती तो है, कुछ शब्दों में कहती है, कुछ भाव में कहती है। हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोचने का सब्जेक्ट है। लेकिन हम सोच के कुछ अच्छा नया करने की सोचें और इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हम पूरी चीज़ नहीं समझते, दूसरों से सीखें। हर एक को पूरा सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे अब भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरा ग्रुप है भारत की सरकार का जो काम कर रहा है, हम सीधे सीधे वहाँ से ले सकते हैं और भी, पर अच्छे से करें ताकि 3-4 साल बाद इसका कुछ इफेक्ट आए और अगले 10 साल में देश में परिवर्तन महसूस हो और आम लोग कहें क्या मेरा बच्चा सुधर गया। वरना तो देखो ना हालत क्या हो जाती है। अब आम लोग कहें मेरा बच्चा अच्छा बन गया शिक्षा से निकल के पढ़कर, क्योंकि हमेशा याद रखना कि योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। सो I would like to thank all of you for this session. Thank you very much. Thanks a lot. अत्यंत आभार सर। इसके साथ ही ये तकनीकी सत्र समाप्त होता है और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर चामू कृष्ण जी को। आप मंच पर आएं, आप कुछ उद्घोषणा करने वाले हैं। धन्यवाद। महामहिमा राज्यपाल जी के सूचना के अनुसार मैं एक सूचना और निवेदन कर रहा हूँ। हमारे प्रयासों से ही हमें भारतीय भाषा को एस्पिरेशनल लैंग्वेज बनाना है और युवा सभी भारतीय भाषा सीखें, सब लोग भारतीय भाषा सीखें। इसके लिए कुछ हमें व्यवस्था भी करना है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के द्वारा 75 लैंग्वेजेस सीखने का एक ऐप बन रहा है। सभी भारतीय भाषाओं, इस साल 75 भाषाएं सीखने का ऐप तैयार होगा, अगले साल और 100 भाषाएं, फिर और 100 भाषाएं। दूसरा, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा शब्दशाला नाम की योजना बन रही है। क्राउड सोर्सिंग पद्धति से सभी देश भर के सभी भाषाओं के सभी प्राध्यापक हम शब्द निर्माण के लिए, टेक्निकल शब्द हो, साइंटिफिक शब्द हो और आधुनिक विषयों को भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए जितने भी शब्द चाहिए, इन सभी लाखों शब्दों को हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें क्राउड सोर्सिंग माध्यम से। और उस प्रकार हम एक शब्दशाला नाम की योजना भी अभी सद्य कर रहे हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, भारत में भारतीय भाषाओं के लिए एक अनुकूल वायुमंडल बनाने के लिए दिसंबर 11 तारीख सुब्रमण्य भारती, जो तमिलनाडु के बहुत श्रेष्ठ राष्ट्र कवि थे, सुब्रमण्य भारती जी के जन्म दिवस को अब भारतीय भाषा उत्सव के नाते, भारतीय भाषा दिवस के नाते पूरे देश में मनाने का ये है। स्कूल कॉलेजेस में सब जगह सभी छात्र अपना अपना भाषा सिखाएंगे, अपनी प्रांतीय वेशभूषा में आएंगे, कॉलेज में स्टॉल्स होंगे भाषाओं के सिखाने का, हर एक स्टॉल में एक भाषा
वाले अपनी भाषा को सिखाएंगे, इस प्रकार का एक अच्छा वातावरण बनेगा इससे भारतीय भाषा उत्सव के माध्यम से। अंत में मेरा केवल एक ही निवेदन है, हम सब भारतीय भाषा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो अब बस इतना ही मेरा निवेदन है। अब रोना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, रोना नहीं है, रोना बंद करना, अभी हमारा पुरुषार्थ का प्रदर्शन करना चाहिए।